A very good morning. You're watching NDTV 24/7. I'm Divya Vada. We have news for you, and that is former gangster turned politician Anand Mohan walked out of jail in the middle of the night. That's right, Divya. We were all expecting him to come out today, but now in a strange turn of events, we found out that Anand Mohan actually walked out of jail overnight. Remember, Anand Mohan was convicted in a murder case, in the murder of a former Gopalganj district magistrate G. Krishnaiah, an IAS officer, and this murder happened in 1994. Now, Krishnaiah was killed by a mob that was allegedly provoked by Anand Mohan Singh, and today, after spending 16 years in jail, Anand Mohan walked free out of jail after the Bihar government tweaked the prison rules. So there's a lot of criticism that the Bihar government has faced. The rules, not just regarding that, but also the rules regarding the release, because according to the prison rules, a prisoner cannot be released up until the sunrise. And this man, Anand Mohan, has come out at 3 o'clock in the night. 3 a.m. is when he walked free. Of course, this is at a time where the Bihar government is facing a lot of criticism regarding the release of Anand Mohan. That's right. One of the parties criticizing the Bihar government has been the BSP, saying that the Bihar government is anti-Dalit, considering that the IAS officer that Anand Mohan was convicted of murdering was belonged to the SC community. So that's what the criticism is from the BSP. But let's listen in to what the reactions are from the family of the IAS officer G. Krishnaiah on the release of the man convicted for his murder in early. Let's just listen in to the wife of G. Krishnaiah and also his daughter. आनंद मोहन जी रिलीज हो गया बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है, बहुत गलत है। ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। It's very disheartening that he's been released from the jail today. Back in 2007, when the case had come out, we thought that the life imprisonment would continue, and there would be no such decision that would be taken where Nitish Kumar ji would be in support of Anand Mohan. And this is very disheartening for us and for our family too. But it's quite some time. It's been it's close to 29 years now. So I think government should reconsider this decision, because my father was a great civil servant. That's precisely what the entire media universe in Bihar is wondering, because all of us have been outside the jail since 5 a.m. and also the prison rule says that if you allow a person to be released in the morning, then it has to be done after the sunrise. Sun has risen after 5 a.m. and all of us were here. And we were never told that he has been, released already. The jailer came to us. The jailer said that he's still inside. We spoke to Chetan Anand on record, who said that he's going to come out like a king. We are going to mobilize. We are going to celebrate. We spoke to RJD followers, but that's what precisely they are trying to do. They were trying to basically, distract the media, because there has been a lot of controversy. And when Anand Mohan was out on parole for his daughter's wedding 2 days before, when Nitish Kumar and Tejashvi were also in attendance, he thought that speaking to media will be a good idea. He spoke to many channels, but that turned into a controversy where the IAS association got very angry. Of course, G. Krishnaiah's wife got very angry. Many organizations said that they need to approach the Supreme Court against his release, and that's why Anand Mohan's lawyer said, and that's a very calculated move, they said that we need to avoid media, we need to avoid controversy at any cost, we need to lie low, and that's why jail authorities have let him go, have released him in the wee hours, in fact before the sunrise, and about after 3 a.m. in the midnight. So that's absolutely bizarre. And something more shocking is that all the officials, all the RJD followers, all the stakeholders have been lying through their teeth to media to avoid them
to distract them and to keep distracting them, and that's what precisely has happened, and that's why nobody has any visuals of Anand Mohan being released from the jail. This is precisely being done to distract the media. This is precisely being done to avoid any kind of controversy. Now, though Anand Mohan enjoys a clout, he enjoys a certain kind of popularity coming from the upper caste dominated dominating Rajput caste in Bihar. He enjoys a clout. He is being celebrated right now. People are hailing him as a hero coming back to the society. But there was, a lot of opposition to him being released as well. The BJP, the Bharatiya Janata Party in Bihar, which is in opposition, they were making all the kinds of noise, saying that this kind of a hardened criminal who has done a who has been convicted for a rarest of rare crime for killing a public servant on duty should never be released. And G. Krishnaya's wife also was seeking time to approach the Supreme Court. She was also seeking time to meet the president against the release of Anand Mohan. But now the shocking news is that he has already been released even before any IAS association, even before anybody could take any kind of action on it. He has already been released under the remission policy, which has done away with the phrase that anybody convicted for killing a public servant on duty is eligible for a premature release, which was not the case until 10 days back. And this was, the BJP is saying, and so are the political experts on the ground, that this was precisely being done to facilitate the release of Anand Mohan. He is the only beneficiary of this amendment. He is the only person who is benefiting from this amendment. So it's the BJP definitely has turned it into a political battle between them and the current dispensation. They are making all kinds of noise. We are hearing that they are also going to file a petition. But as of now, the news is that under everybody's nose, without letting any media take any visuals, Anand Mohan has already been released from Saharsa jail in the wee hours, in fact in the midnight today. And also exactly what happened in 1997 during that attack on Gopalganj District Magistrate G. Krishnaiah. Let's get you an account from his driver who was right there driving the car when that attack took place. ऐसे तो हम लोग मैंने मुजफ्फरपुर होकर पटना गए थे, हाजीपुर गए थे मीटिंग में, तो इधर से जुलूस जा रहा था। अब किसका जुलूस था ये नहीं बता सकते। तो अपना गाड़ी साइड से लेकर निकल रहे थे, तो एक बैग आगे पीछे सब लोग घेर लिया। हाँ। अब घेर लेने के बाद से गाड़ी के प्रचार पर से घेर लिया लोग। उसके बाद से बॉडीगार्ड वो खींचा गया। क्या हुआ उसके बाद? बॉडीगार्ड को खींच लिया लोग। बॉडीगार्ड को खींच लिया। अच्छा। जी। हाँ। उसके बाद गाड़ी पर हाथ हो तो सब चलाना शुरू कर दिया। तो हम साहब को लेकर भाग गए। हाँ। साहब को भीड़ में से गाड़ी निकाल लिए हम साहब के साथ में। हाँ। आप साहब को लेके गाड़ी में निकल लिया आगे? जी। ठीक है जी। बॉडीगार्ड छूट गया था। हाँ। बॉडीगार्ड खींचा गया तो छूट गया। हाँ। तो फिर आगे भीड़ में से गाड़ी निकाल लिए तो साहब गाड़ी रुकवा दिए। हाँ। हम गाड़ी नहीं रोक रहे थे, साहब गाड़ी रुकवा दिए। साहब गाड़ी क्यों रुकवाए? पता नहीं, अब काहे रुकवा दिए, बॉडीगार्ड छूट गया था उसके चलते। हाँ। तो गाड़ी रुकवा दिए। हाँ। हम गाड़ी नहीं रोक रहे थे। हाँ। और फिर आगे पीछे सब भीड़ घेर लिया। ओहो। और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, बस साहब को उधर हमको गाड़ी में गर्दन सब दाब दिया था। आपकी गर्दन स्टेयरिंग में ऐसे करके दबा दिया था? जी। और साहब को निकाला पीछे से गाड़ी से? जी। और फिर उसके बाद? अब उसके बाद क्या, हमारा गर्दन साहब 2-3 फाइट मारा लो, कान पर मारा लो। हाँ। कान पर चोट लगा तो कम सुनाई देना हुआ, अभी भी कम में सुनाई देता है। अच्छा, माफी चाहूंगी मैं, नहीं आपके सामने। उसके बाद क्या हुआ? कृष्णैया साहब के साथ क्या हुआ उसके बाद? अब तो साहब को उधर खींच लिया तो हम लोग सब माने तीनों आदमी 3 खल के हो गए। अच्छा। साहब किधर है? हाँ। हम किधर, हमको मारना शुरू किया तो हम लोग रोड की तरफ भागे। हाँ। साहब उधर भागे। हाँ। उसके बाद आगे भागते गए हम, फिर उधर से लौट के आए तो देखे गाड़ी उल्टा हुआ है। भीड़ मन चल गया था। हाँ। तो लौट के आए तो गाड़ी उल्टा हुआ है। उसके बाद साहब को देखे कि खाई में नीचे पड़े हुए हैं। अच्छा, आपने देखा कि साहब खाई में नीचे पड़े हुए हैं। आप गए उनके पास? आपने अपने आँख से किसी को देखा था वहाँ पे साहब को मारते हुए या ऐसा कुछ? नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं। अच्छा, और आप जब आए, आपने जब साहब को देखा नीचे खाई में, तो आप गए उनके पास? आपने क्या साहब नहीं जीवित? सीधा गाड़ी DSP की गाड़ी आ रहा था। हाँ। वही जुलूस की तरफ जा रहा था तो वो गाड़ी को रुकवाए। हाँ। उसको बोले कि सर हमारे गोपालगंज का है। हाँ।
वही गाड़ी पर लाद के हॉस्पिटल लेके गए। And 10 policemen and their driver were killed yesterday when their rented vehicle, a minivan, was blown up by an IED in Bastar in Chhattisgarh. Maoists used a massive 50 kg IED which flung the vehicle. That was the third vehicle in the convoy that had no ballistic protection at least 20 feet in the air. That's right, and now the wreath-laying ceremony is being performed there for these 10 brave hearts who were killed in that Maoist attack in Chhattisgarh. My colleague Anurag is joining us for more details on this. And Anurag, we're seeing the visuals of the wreath-laying ceremony that's currently going on. And while that happens, what have been the questions that have been raised as to why this happened? Were there any lapses? Yes, the preparations are on for the wreath-laying ceremony, but the Chief Minister will reach there at around 10:50 in Dantewada, and between 11 to 12 p.m. the wreath-laying ceremony will be performed. Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel and Home Minister Tamarध्वज Sahu will also pay homage to the 10 DRG personnel who were killed after a Naxal attack on Wednesday. CM Baghel also held a high-level meeting in Raipur yesterday to review the situation in Dantewada following the attack. But Priyanshi, clearly there was clear lapses in the anti-Naxal operation. Questions have been raised over why a road opening patrol did not sanitize the route that a convoy of policemen took before Maoists ambushed them with an IED explosion. And a road opening party usually consists of a small team that checks a route for possible ambush and clears threats ahead of the main convoy. Secondly, there was Ama Pandum, a local celebration which was being celebrated some 100 meters away from the ambush site. And in this festival, basically the children, the kids from the village, they asked for money from the passerby or the elders in the village for buying mangoes. And usually in that particular area, the vehicles travel on a much faster speed, but they stop them, and possibly that can also be a ploy by the Naxals to stop those vehicles. And because there were 5 to 6 vehicles in that convoy, and they were traveling at a safe distance of say 200 to 250 meters away. And after that particular vehicle was blown off, 2 vehicles were just behind that particular vehicle, and they stopped and they also started firing, but there was no Naxal presence there. So if a road opening party was there, they must have seen some suspicious elements, or and they could have prevented the attack. Priyanshi? Right, Anurag, thanks very much for joining us. And as you were pointing out that there are several questions there, and our colleague Zulfikar is on the ground in Dantewada in Chhattisgarh, and he shows us a sense from ground zero of what all those lapses could have been. थाने के पास जो एक नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया था, ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं और कुछ यहाँ पे खामियां नजर आ रही हैं कि ये घटना कैसे हुई। उसका एक एंगल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सड़क जो है हाल में ही बनी और इसके रिपेयर भी हुआ, लेकिन सबसे बड़ी जो चूक हुई, क्योंकि जो विभाग के द्वारा सड़क बनाई जाती है और जो नियम होते हैं कि सड़क में जो गिट्टी डालनी है, मुरुम डालनी है, बालू डालनी है, वो बाहर से आएगी। लेकिन यहाँ की मौजूदा जो परिस्थितियां हैं वो दिखाती हैं कि यहाँ पे जो ठेकेदार रहे होंगे, उन्होंने यहाँ पे जो सड़क बनाई उसके किनारे ही गड्ढे खोद दिए और एक लंबा ट्रेंच कर दिया। तो ये एक लंबा दिखाई दे रहा है कि 1 किलोमीटर का एरिया, और यहाँ पे अगर कोई नीचे बैठता है तो सड़क से दिखाई नहीं देगा, और नक्सलियों के लिए कोई नियम कानून नहीं। तो इधर जो गड्ढा है, इस गड्ढे से भी एक होल करके, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो चुकी है और मिट्टी को निकालना बहुत मुश्किल काम नहीं है, तो आईईडी यहाँ से प्लांट किया जा सकता है। तो एक बड़ी चूक हो सकती है, क्योंकि पैसा बचाने के लिए भ्रष्टाचार जो करते हैं अधिकारियों से मिलीभगत के साथ ठेकेदार, तो वो एक कारण यहाँ पे हो सकता है। दूसरा एक और कि ये वो जगह है जहाँ पे आम पंडुम मनाया जा रहा था, और यहाँ के स्थानीय जो बच्चे हैं वो यहाँ पे बैठे हुए थे, और यहाँ पे उन्होंने नाका लगाया हुआ था, लोगों से पैसे जो इकट्ठे करते हैं, जो गांव वाले त्योहार मनाते हैं। और उसके पीछे एक और गड्ढा है। तो ये जो गड्ढा इतना बड़ा गहरा है, ये फाइबर केबल बिछाने के लिए गड्ढा खोदा गया है। तो ये भी एक जो गड्ढा है वो नक्सलियों के लिए मदद कर सकता है, क्योंकि ये सड़क जो है ना ज़्यादा चलने वाली सड़क नहीं है, कई सारी गाड़ियाँ निकलती नहीं है।
भीड़ यहाँ पे होती नहीं है। तो अगर इस तरीके के गड्ढे खोदे जाएंगे और यहाँ से एक छोटे से ड्रिल करके आईईडी प्लांट किया जा सकता है, तो एक बहुत बड़ी चूक जो है वो यहाँ पर नजर आती है कि ठेकेदारों के द्वारा फाइबर केबल जो बिछा रहे हैं, उनके द्वारा जो गड्ढे किए गए वो नक्सलियों को कहीं ना कहीं मदद करते हैं। और ये एक आशंका जाहिर की जाती है जिसे प्रशासन को ध्यान में देना होगा। लेकिन जो कल घटना हुई वो बेहद ही दुखद रही, जिसमें डीआरजी के 10 जवान शहीद हुए और एक स्थानीय ड्राइवर की मौत हुई है। तो जो जिस तरीके के लूप होल समझ में आ रहे हैं, जो प्रथम दृष्टया नजर आ रहे हैं, उसे प्रशासन को ध्यान में देना होगा ताकि आने वाले वक्त में इस तरीके की दूसरी वारदात ना हो। और जो सरकार के दावे हैं कि नक्सल बैकफुट में हैं, तो ऐसे अगर लूप होल छोड़ेंगे और इस तरीके की खामियां प्रशासन के द्वारा छोड़ी जाएंगी और विभाग के द्वारा छोड़ी जाएंगी, तो आने वाले वक्त में इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रहेंगी। Many questions being raised regarding the road opening patrol that would sanitize that route, and that wasn't sanitized, the route that was taken by the convoy. With that, we're slipping into a short break. But we'll get you more news on the other side, so stay tuned. Mortal remains of ex-Punjab Chief Minister Prakash Singh Badal brought to native place Lambi for last rites. The 5-time Chief Minister's mortal remains will be kept for last rites from 10 o'clock this morning till about noon at his house in Badal village. The cremation will take place at around 1 p.m. The BJP President JP Nadda along with Union Minister Hardeep Singh Puri will attend the cremation. It's truly an end of an era as Punjab's youngest and oldest Chief Minister has died. My colleague Saurabh Shukla sent us this report from Punjab. Right now we are at Badal village of Prakash Singh Badal. His last rites will be performed here. This is the platform which has been made by the administration along with the family members of Prakash Singh Badal. Cremation will happen at 1 p.m. today, and before that from 10 a.m. to 12 p.m. his mortal remains will be kept at his ancestral house for last respects. According to administration, more than 50,000 people are expected to attend this funeral, and you can see administration is making arrangement for that. Prakash Singh Badal was admitted to a private hospital in Mohali a week ago and was moved to the ICU after his health deteriorated, and Tuesday evening he passed away. Leaders across the political lines condoled the death of Badal. Prime Minister Narendra Modi also reached Chandigarh yesterday and he was there for quite some time. But Prakash Singh Badal was born in 1927. He has experienced politics for more than 75 years. The youngest Chief Minister of Punjab. In 1947, he was elected as Sarpanch of this village, Badal, and then Chief Minister at the age of 43. And one more record on his name. He was the oldest Chief Minister as well when he sworn as Chief Minister in 2012. Prakash Singh Badal was first elected on a Congress ticket in 1957, and he became Chief Minister of Punjab for the first time in 1970 at the age of 43. Prime Minister Modi also said that it is his personal loss. Today, BJP President JP Nadda along with several union ministers will also attend the funeral. Preparations are underway for the cremation of former Punjab CM Prakash Singh Badal at his ancestral village, Badal. You can see senior officials of Punjab Police, DM, SDMs, all are here, and this is Prakash Singh Badal's field. And according to the family members and close associates, this is the garden of Kinu, and it was this garden, particularly this garden, was very close to the heart of Prakash Singh Badal. That is why funeral will happen here at 1 p.m. Lot of leaders from all the political parties are likely to attend. As I've said, BJP President JP Nadda will also attend. More than 50,000 people are expected
to attend the funeral of Prakash Singh Badal, as they say that Prakash Singh Badal was Pitama of Indian politics and Punjab. In Badal village with Ashwani Mehra, Saurabh Shukla for NDTV. Welcome back. The first batch of 360 Indians from crisis-hit Sudan arrived in the national capital last evening under Operation Kaveri. Nearly 1,100 Indian nationals have been evacuated from conflict-hit Sudan under the government scheme of Operation Kaveri. The 360 Indians were picked up by a Navy ship and an IAF C-130J plane of Operation Kaveri from Port Sudan as a 72-hour ceasefire was declared between the warring generals to help evacuate foreign nationals. They were then flown to India from Jeddah in Saudi Arabia. Many of the Indians who landed last night appeared traumatized, having repeatedly seen neighboring houses bombed, missiles flying overhead, and people being robbed at gunpoint. They said that they feared that they could have died any moment. Listen in. बहुत गोलाबारी, खाने पीने का कोई सामान नहीं, लूटपाट सब चल रहा है वहाँ। हम 10 दिनों से वहाँ पे फंसे हुए थे। 10 दिनों से बातचीत करेंगे। आप बताइए, सूडान से आए हैं, भारत सरकार और राजस्थान सरकार का कैसा सहयोग मिला है? हमारे को काफी सपोर्ट मिला है राजस्थान और इंडियन गवर्नमेंट से। और मोस्टली हम कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी के कावेरी मिशन के नेतृत्व में हमें काफी सपोर्ट मिला और हम यहाँ तक सेफली पहुँच पाए हैं। और हमारे सुब्रमण्य जयशंकर साहब, उनका बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। गोलियां तो ऐसे चला रहे हैं जैसे कि दिवाली के पटाखे चल रहे हो वहाँ पे। क्या कर रहे थे? सर मैं नहीं करती, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, ओमेगा स्टील कंपनी में सीए हैं, तो उनके साथ मैं और मेरे बच्चे रहते हैं। तो हमारी पूरी फैमिली 10 साल से वहाँ स्टे कर रही थी। कब से वहाँ पे हुई है? एक्चुअली सर पैसा तो 3 साल से कंडीशन खराब थी, प्रोटेस्ट चल रहे थे 3 साल पहले, लेकिन प्रोटेस्ट था कि आर्मी और लोकल के बीच में, तो इतना प्रॉब्लम्स नहीं आए थे। लेकिन अब स्टार्टिंग अचानक से आरएसएफ वालों के बीच में और आर्मी के बीच में स्टार्ट हो गई है, तो उन लोगों ने आपस में गोलियां चलानी, बॉम्ब गिराने, मिसाइलें छोड़नी, ये स्टार्ट कर दिया। स्थिति अभी तो खराब ही है, क्योंकि जो लोग अभी इस टाइम में तो उन्होंने थोड़ा स्टॉप कर दिया है, लेकिन जब शुरू हुआ था उस टाइम अर्ली मॉर्निंग 8:30। कितने दिनों से वहाँ पे चल रही है सर? ये 15 तारीख को शुरू हुआ ना, 15 तारीख को शुरू हुआ। The first set of Indians have been rescued under Operation Kaveri from crisis-hit Sudan. We have some of them with us. Ma'am, could you please tell us your name? ज्योति अग्रवाल। So, ma'am, what are your first thoughts after you've been rescued and brought back to India? That I'm safe here. I come here. Right now I'm stay in my India. This is my country, and I love it. I don't want to go back to Sudan again. So, ma'am, what was the situation there? How do you describe? क्या सब आपने वहाँ पर देखा है? Situation is too much worse there. The missiles is going in the houses. Bombs are just going outside. मतलब इतना ऐसा लग रहा है कि कभी भी आप मर सकते हो। कोई वो ऐसा नहीं है कि आप एक सिंगल पर्सन मरेगा या सारे मर जाओगे या आपके साथ क्या होगा, कौन सा एक्सीडेंट हैपन होने वाला है, कुछ नहीं पता आपको। तो अपने आसपास आपने बॉम्बार्डिंग देखी है? बिल्कुल देखी है। इवन मेरे घर के ऊपर से मैंने जेट फायरिंग होते हुए देखी है मैम, मिसाइलें निकलते हुए देखी हैं। मेरे घर के दो गली छोड़ के हम लोगों ने बॉम्ब के साथ बिल्डिंग को उड़ते हुए देखा है। हमारे ऑफिस के लोगों को गन पॉइंट पे देखा है। तो वहाँ पर मतलब क्या, कौन सब लोग हैं जो लोगों को मार रहे हैं या बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं? ये सब आर्मी के लोग हैं, वही कर? 2 आर्मी हैं, जो 2 गवर्नमेंट हो गई हैं जो आपस में लड़ रही हैं। तो क्या यंग लोग, बड़े लोग, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? क्या सब आपने माना? एक्चुअली मेन चीज़ ये है कि जो आर्मी है, मेन आर्मी है, वो तो यंग है, वो उनको तो पता है कि उन्हें क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या नहीं लेने हैं। बट जो दूसरी आर्मी है उसमें इस टाइप के बच्चे हैं, तो उन्हें कोई डिसीजन नहीं है, उनके हाथ में गन पकड़ा दिए गए हैं, तो वो तो सिर्फ स्नैचिंग करना जानते हैं कि वो स्नैच कर रहे हैं। उन्हें इमीडिएटली या तो अमीर बनना है या क्या रीजन है वो जानते हैं। मैम, आप क्या काम करती थी वहाँ? मैं कुछ नहीं करती, मेरे हस्बैंड सीए हैं ओमेगा कंपनी में, तो उनकी वजह से हमारी पूरी फैमिली वहाँ रहती है। तो क्या आप सब कुछ वहाँ छोड़ कर आ गई हैं? क्या आप वापस लाई हैं यहाँ पर? कुछ नहीं है मैम, बैग्स में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े मेरी बेटी के हैं, सेम थिंग मेरे बेटे का है, और 2 ही जोड़ी मेरे कपड़े हैं। मेरे हस्बैंड के कपड़े भी नहीं लाए हम।
कुछ नहीं लाए, नहीं, जान बचा गई। बस जान बचा के हम वहाँ से आए। इवन हमारा जो मनी वगैरह था वो भी तिजोरी के अंदर जो था वो छोड़ दिया हमने, क्योंकि हमें यह था कि अगर हम उसको निकालने के चक्कर में रहे तो मे भी वो भी स्नैचिंग हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, उसके चक्कर में किसी की जान भी जा सकती है। तो वो सब छोड़ो, नए सिरे से शुरुआत करते हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं बस। तो निकलना बेटर था हमारे लिए। तो क्या वापस जाने का सोचेंगे कि अब नई शुरुआत? बस नई शुरुआत मैम, अब सूडान वापस नहीं जाएंगे, यहीं पे कुछ शुरू करें? चाहे कंडीशंस कितने भी बेटर हो जाए, वापस नहीं जाना। आप बताइए, आपका नाम क्या है, कितने साल की? मेरा नाम आलिजियान है, मैं 10 इयर्स की हूँ। कैसा लग रहा है वापस आकर? बहुत अच्छा लग रहा है, अब लग रहा है कि हाँ मैं सेफ हूँ अपनी कंट्री में। आपने क्या देखा वहाँ पर? कुछ टेंशन्स थी, डिस्टर्बेंस थी, क्या देखा आपने? मैं स्कूल में थी, मैं अपना एग्ज़ाम दे रही थी, एकदम से नॉइज़ आई। वो किस चीज़ की नॉइज़ थी तब मुझे पता नहीं थी। बाद में मेरे फ्रेंड से पता चला कि यहाँ पे गन्स चल रही हैं, बॉम्ब्स फेंक रहे हैं, और मतलब ऐसे बिल्कुल ख़राब हालात हैं। तो तब स्कूल में सुना ये सब? नहीं, मैं स्कूल में थी, मैं अपना एग्ज़ाम कर रही थी। बाद में जब पता चला तो बहुत डर गई। हमें कैंटीन में लेके गए, बोला गया कि टेबल के नीचे छुप जाओ। अच्छा। तो बहुत डरे हुए थे घर जाने का, पता नहीं कैसे जाएंगे। पापा निकल नहीं सकते ऑफिस से क्योंकि बाहर आरएसएफ खड़े हैं, मार देंगे। मम्मी घर से आ नहीं सकती, कोई टैक्सी नहीं, रिक्शा नहीं, कुछ नहीं। और आप स्कूल में फंसे थे? यस। तो बहुत डर लग रहा था वहाँ पर? हाँ, बहुत डर लग रहा था वहाँ पे। अब वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सबको अपनी कंट्री में सेफ फील होता है। क्या आप अपने टॉयज और अपना सारा सामान क्या वहाँ पे छोड़ के आना पड़ा आपको? सब कुछ वहीं पे है, 10 ईयर्स से वहीं पे थी मैं, कुछ भी नहीं ला पाई, सिर्फ अपने 2 जोड़ी कपड़े के अलावा। पर तब भी खुशी है कि सेफली यहाँ पर वापस आ गए। हाँ। सिर्फ एक ही चीज़ का दुख होता है कि फ्रेंड सर्कल रह जाते हैं आपके पीछे। जो आप 10 साल से रहते हो, आप अपने फ्रेंड्स बनाते हो, एक फैमिली बन जाती है वो आपकी, तो वो सब आपका वहीं रह जाता है। आपके भी फ्रेंड्स रह गए होंगे वहाँ पर, एक इंडियंस और जो फ्रेंड्स होंगे वो काफ़ी लोग वहीं पर फंसे होंगे। मेरे जो फ्रेंड्स थे इंडियन नहीं थे, वहाँ के लोकल थे, सुडानी। तो मेरे सारे फ्रेंड्स थे, बहुत दुख है मेरा कि मैं उनसे मिल नहीं पाई। कोई बात नहीं, क्या आप यहाँ पे नए फ्रेंड्स बना लेना आप, और आप वापस आ गए, वही खुशी की बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। लकी लग रहा है कि आपको कि आप पहला सेट हैं उन लोगों का जो सूडान से वापस आए हैं? लकी लग रहा है? लकी तो है, हाँ। तभी फर्स्ट सेट में वापस आ सके, अदरवाइज नहीं आ सकते थे। पॉसिबल था कि हो सकता सेकंड सेट और मे बी मोर देन। धन्यवाद. Thank you very much for speaking to us. So as you heard, they are glad that even though they had to leave all their belongings there, they are glad to be back, they are glad to be safe, and as that little girl is remembering the horrors she has faced there in Sudan as the fighting is continuing for over 10 days. So while they remember the horrors, they've left everything there and they're going to start a new life here in India. In New Delhi with camera person Kanan Patra, Priyanshi Sharma for NDTV. The first flight rescuing Indian nationals from crisis-hit Sudan has landed in the national capital. It was carrying 360 Indian nationals who have been rescued and they've reached India now through the Indira Gandhi International Airport here in the national capital. Let's speak to some of them. Sir, आपका नाम बता दीजिए और आप कितने साल से सुदान में रह रहे थे? अभी हम लोग तो 8 ही महीना हुआ, फर्स्ट बार गए थे। खार्तूम में एयरपोर्ट के बगल में ही थे। 14 तारीख को सुबह 9 बजे से काम चालू हुआ। ऐसे करते करते इन लोगों को 10 दिन ये लोग अपने में लोग किए, जिससे लोगों को, इंडियन लोगों की सबको बहुत दिक्कत हुआ, बहुत लोगों की जाने गई, जिससे लोगों की परेशानी हुई। उसे तब हम लोगों ने भारत सरकार को खत भेजा और एसएमएस भेजा कि हमें बुलाया जाए, नहीं तो हम लोग की भी जान जा सकती है। बहुत लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे तो भारत सरकार द्वारा नौसेना भेजी गई, जिससे पहले शिफ्ट में हम लोग खार्तूम, वहाँ से खार्तूम से हम पोर्ट सुडान आए, वहाँ से हमारी नौसेना हमें लेकर सऊदी आई। खार्तूम से आप पोर्ट सुडान कैसे पहुंचे? वहाँ से हमारी स्पेशल बस की गई, वहाँ सरकार ने की, सरकार द्वारा। वहाँ से लोग कुछ बातें किए जो इम्पोर्टेंट थे, सरकार से बातें किए तो उन्होंने कहा बस करो, आप अपने माध्यम से उसकी जो डिपॉजिट रहेगा मैं जमा करूँगा। तो उन्होंने तुरंत ही चालू किया और लाया गया सभी को वहाँ से खार्तूम पोर्ट सुडान से हमें नौसेना के द्वारा सऊदीया लाया गया। पोर्ट सुडान से आप सऊदी कैसे आए? और नौसेना गई थी, ये इंडियन आर्मी से, शिप के द्वारा, शिप से। तो ये बताइए कि 10 दिन वहाँ पर फाइटिंग चल रही है, अभी भी चल रही है, अभी सीज फायर हुआ है, तो आपने क्या देखा उस फाइटिंग में? आपने अपने आसपास क्या देखा? यही बंदूक के गोली चल रही थी और कुछ नहीं, तोपे चला रहे थे लोग,
बहुत सारे वीडियो है, लेकिन मान लीजिए दे नहीं सकते अभी। हम लोग रिकॉर्डिंग किए तो उसी के बगल में एयरपोर्ट खार्तूम के बगल में ही जस्ट थे हम लोग। अब वापस आकर कैसा लग रहा है, अपने देश वापस आकर? हम अपने सेना को देखे बहुत खुशी हमको मिली मैडम जी, ताकि हम अपने देश जाएंगे, अपने परिवार में जाएंगे, इससे बढ़ के क्या चाहिए हमें। बहुत खुश हुए हम लोग, पूरे जितने भारतीय थे नौसेना को देखा तो दिल में जैसा साला जिंदगी नहीं मिल गई हम लोग को, वैसा महसूस हुआ आकर अपने देश में। बहुत बहुत बधाई हो, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग वापस आ गए। एक आखिरी सवाल ये होगा कि अगर सिचुएशन बेटर होती है तो क्या आप सूडान वापस जाने का सोचेंगे? नहीं, कभी नहीं, अब नहीं जाएंगे उधर। वहाँ की हालात ही ऐसा है कि सरकार वहाँ की अच्छी नहीं है। क्या काम करते थे आप? हम इस क्रॉप लाइन से गए थे मैडम। So as you can see, 360 people have come here. They've landed here in the national capital. They've reached India. The fighting in Sudan continues for more than 10 days now, and it is a fight that's going on between the army and the paramilitary forces. And in fact, more than 450 people have died there. And as these people are recounting the horrors of Sudan, they've seen shelling, they've seen fighting, and many of them are saying that they've gotten a second life after coming back. As you can see, several people who have come here, their families are welcoming them back here in India, and several people coming back here in the national capital after being rescued from the crisis hit Sudan. 360 people have landed here in India as part of Operation Kaveri, which is going to rescue more people from Sudan as well. Now, while the BJP government in Karnataka brought in a new reservation quota for the state, removing the 4% quota for Muslims, now with the countdown to polls, Congress party Siddaramaiah in a tweet said that the party is committed to increasing the reservation limit from 50% to 75% and increase that reservation to all castes based on their population. Joining me now is former Prime Minister H.D. Devegowda and former Chief Minister of Karnataka H.D. Kumaraswamy. Together, they've not just scripted the politics of the old Mysore region, but have also often scripted post-poll politics in Karnataka. And as we head into an election, sir, my first question is, the BJP says that voting for the JDS is like voting for the Congress. The Congress says JDS is BJP's B team. Who is your number one enemy? Here, both the parties, they treat us like enemy only. Whenever they require JDS assistance, then they will come to us. That is their character. But I wanted to tell you one thing. Whatever BJP friends telling, we are the B team of Congress. Then Congress telling we are the B team of BJP. But my message is that we are the B team of Kannadigas. We are with Kannadigas only. Real ground realities, we are the B team of Kannadigas. That is my analysis. Sir, how do you see this, sir, in this election? Is this a fight for survival for JDS in these elections? See, the JDS, the Supremo is H.D. Kumaraswamy. Actually, I am not praising him as he is my son. He is working very hard and created full confidence in the people of the state, because he became twice chief minister with the support of BJP for about 18 months, with the support of Congress for 14 months. During that short tenure, he has worked a lot and people trust him. The trust is more important rather than making false promises. So that's why I am in full confidence this time he will get working majority. Okay, but sir, in the event of not getting a working majority, and I say that the Congress has got two leaders who's there. One is D.K. Shivkumar, who represents the same caste vote that the JDS has. The other is Siddaramaiah. Who do you think is the bigger enemy for the JDS? Is there one person you prefer over the other? No, I would like to tell you, I don't want to comment on the Congress, D.K. Shivkumar or Siddaramaiah. What all happened in Varna, this Yediyurappa's son earlier wanted to contest in Varna against Siddaramaiah. Then that was withdrawn. Now some other candidate was thought over. All that
what is going on, it is left to that party to come to their own opinion. I don't want to unnecessarily tarnish the image of any individual, but it is their high command that has to take. Sir, in a sense, the BJP seems to be going after the old Mysore region in a way that it has not before in the past. You've seen a lot of campaigns down there. Today, Yogi Adityanath is there. Does that make you nervous? Is there a fear that the core caste vote of the JDS may desert the party or may break or splinter? Whatever effort they are doing from BJP side by sending several leaders from Delhi to divide the voters in Mandya or Mysore or anywhere where we are strong, it will not work out according to me. So what is your thought on opposition unity, sir? No, opposition unity I cannot say because I have not told the state. Only Kumar has got West Bengal and Telangana, and he was also concentrating only in Karnataka because the time is very short, and only after the assembly election is over he can think of approaching the other friends, not now. So what about the last issue that one has seen in Hassan as well? There was a dispute over the ticket. Is there a rift within the family? Does that worry you at some point of time? The kind of news reports that one saw about who's getting the seat at Hassan, whether it is your daughter-in-law or whether it is the party worker. How do you deal with all this? Just watch for about 20 days how Hassan will. They give the mandate with the people of Hassan district. Just watch. But don't you feel, I myself will take the responsibility about my home district. And China's Defense Minister General Li Shangfu will be in India and will be having a meeting with the Chinese Defense Minister and Jaishankar. This is on the sidelines of the SCO. This is the first meeting with the Chinese Defense Minister since the Galwan crisis of 2020. On the other side, significantly, India has turned down a structured bilateral meeting between Foreign Minister Jaishankar and his Pakistani counterpart, Bilawal Bhutto Zardari, when Mr. Zardari will be here in India, in Goa next month for the Foreign Ministers meeting of the SCO. That's going to be held on the 4th and 5th of May in Goa. Vishnu has the details. Well, China's defense minister is over here and he's going to be having talks with our defense minister, but the Shanghai Cooperation Organization meet between the 27th and the 28th of this month. The SCO, the Shanghai Cooperation Organization, includes India, Russia, China, the Kyrgyz Republic, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan and Pakistan. Now, in a statement ahead of the visit, the Defense Ministry has made it clear that sovereignty and territorial integrity are key to the SCO process. Now, that's a key signal since India wants China to leave from areas that they've intruded into. So that's what the Defense Ministry has made very clear. Now, this meeting follows the 18th round of military talks between India and China in Ladakh, a meeting which led to no progress. But significantly, China and India did talk about Depsang and Demchok, two areas where India wants the Chinese to leave. Those talks do in fact continue. Both sides are committed to military talks. Now, Pakistan's defense minister will participate in SCO, but he'll be participating only online. He will not be participating in person. Significantly, just days after the Poonch terror attack in which 5 Indian soldiers were killed, we believe that India's foreign minister, Dr. Jaishankar, will not meet his Pakistani counterpart at a bilateral meet of foreign ministers of the SCO who are scheduled to meet in Goa next month. So that's a big message to Pakistan. If there is terrorism over here, it cannot be business as usual in our relations.